Let answer the question number 7. Sorry, I became 5 to 6 minutes late. The scheduled timing of this online live class is 10 p.m. Let's see the question number 7 or listen the question number 7. Ns and electrons moving at the same speed goes through a thin region in which there is a magnetic yield perpendicular to the beam. The protons and the electrons. You have listened the question. This question has four options A, B, C, D. Option A will go undeviated, will be deviated by different angles, hence separate. And option B will be deviated by the same angle and will not separate. Option D will be deviated by the same angle but will separate. Let's see the answer. To answer this question, we take the help of the formula. Magnetic force is given by F, magnetic force, or any force which is generally denoted by capital alphabet F. So F equal to QVB. V the magnetic field, V the velocity of the moving charge, and Q is the quantity of the moving charge. So let's see. Force on electrons is F minus QVB. We know that electron has negative charge. Force on proton is, we know that proton has positive charge. So both have same magnitude but different sign. The magnitude of the force on proton and electron are different, but the magnetic force acting on both are same. The force acting on the proton is in positive in direction and the force acting on the electron is in negative direction. Even same force is acting on them, but because of different direction, they got deviated by different angles and they will separate. So option C is correct. So according to this one, evident that or clear that even same force acting on them, but because of different direction, they have got deviated by the different angle and they will separate. So option C is correct. So you note down option C for this question. Let's see the question number 8. Here you are watching question number 8. आप यहाँ पर question number 8 को देख रहे होंगे. Now I am going to read the question number 8. A charged particle moves in a uniform magnetic field. The velocity of the particle at some instant makes an acute angle with the magnetic field. The path of the particle will be. This is a multiple choice question. Question has four options. Option A has the following written statement: a straight line. Option B has a circle. Option C has a helix with uniform pitch and helix with non-uniform pitch. Let's see the answer of this question. There is a relevant figure for this question. This is the velocity v and this is the resolution of the v along y-axis and x-axis.
Let's read here. Given that velocity of a particle is making an acute angle with the magnetic field, velocity of a particle is resolves into two components, or this is the resolution of the velocity of the particle along y and x axis. Magnetic field always change the direction of the velocity. One component is perpendicular to the magnetic field, that is v sin theta, and another component is parallel to the magnetic field, is v cos theta. Vertical component of a velocity is perpendicular to the magnetic field, then the act force will act on the charged particle because of the vertical force v sin theta, and the particle will make a circular path because of two components of the velocity. The particle will move in a helical path. This path will maintain the uniformity. So option C is correct. So option C will be the correct option of the question number 8. Let's see the next question. This is the question number 9. Now I am going to read the question number 9. A particle moves in a region having a uniform magnetic field and a parallel uniform electric field. At some instant, the velocity of the particle is perpendicular to the field direction. The path of the particle will be. Question 9 has four options. Option number 1, a straight line, a circle, a helix with uniform pitch, a helix with non-uniform pitch. Let's analyze the question as the answer. आंसर के तौर पर इस क्वेश्चन का एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं. द रीजन हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. रीजन के पास बहुत मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. इसके लिए लॉरेंज फोर्स का यूज किया गया है. सो F इक्वल टू क्यू ई, हियर इज द चार्ज, E is the electric field, Q is the charge, V is the velocity of the moving charge and B is the magnetic field. मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों को ऐड करने से हमको लॉरेंज फोर्स मिलता है. सो दिस इज द F, वेयर F इज लॉरेंज फोर्स. Q का वैल्यू आपका होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. E इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पहले ही बता चुका हूँ. V is the magnetic field strength, V is velocity. The electric field will accelerate the particle to move in the direction of the magnetic field. Magnetic field will always change the direction of velocity of a particle. Because of this, the particle will move in a helix path with non-uniformity, and this statement is present in option D. So the correct option of question number 9 will be D, and answer will be a helix with non-uniform pitch. So hope that there is no problem to understand the analysis of the answer of this question. So let's see the question number 10. आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं. An electric current I enters and leaves a uniform circular wire of radius A through diametrically opposite points. A charged particle Q moving along the axis of the circular wire passes through its center at a speed v.
The magnetic force acting on the particle when it passes through the center has a magnitude. This is a multiple choice question. ये एक प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपका 4 ऑप्शन है. लेट्स सी द ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपका है क्यू भी म्यू नॉट आई बाय 2 अल्फा, क्यू भी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई अल्फा, सी क्यू भी म्यू नॉट into I by alpha, and D is the 0. Let's see the answer of this question. Answer of this question will clear which option will be correct. ये क्वेश्चन का आंसर ही क्लियर करेगा कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा. करंट इज इंटर्निंग इनटू द सर्कुलर वायर. सर्कुलर वायर में करंट इंटर कर रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल, left hand thumb rule proposed by the Fleming. So this one is also known as the Fleming's right hand thumb rule, Fleming's left hand thumb rule. So according to the right hand thumb rule, the magnetic field will be in axis of the circular wire. It is given that the charged particle is moving along the axis of the wire. इन दिस क्वेश्चन वी यूज द फार्मूला. इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज कर रहा है. दिस इज द एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. हियर बी डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड. तो क्यू वी, क्यू डिनोट द मूविंग चार्ज, क्वांटिटी ऑफ द मूविंग चार्ज. v is the velocity of the moving charge. So let's see, when the particle is moving along the axis of a wire, the magnetic force acting on it will be 0. So option D will be correct. तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप शायद क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन कर लिए होंगे. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह ऑप्शन आपका डी है. अभी ऑब्जेक्टिव 2, वो ऑब्जेक्टिव 1 था, इसको भी देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव 2 में पहला क्वेश्चन, इफ ए चार्जड पार्टिकल at rest experiences no electromagnetic force. दिस इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ऑप्शन ए आपका है द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0, द मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0. आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. सारे के सारे क्वेश्चन आपके एस.सी. वर्मा के बुक से लिया जा रहा है. ऐसे आंसर तो बुक में दिया हुआ रहता है बट एनालिसिस जो है बुक में नहीं दिया हुआ रहता है. तो लेट्स सी इसके आंसर को हम लोग एनालिसिस करते हैं. सो लेट्स सी द, इफ यू पुट एट ए गैलेंस हियर, यदि आप यहाँ पर एक गैलेंस लगाते हैं या एक झलक डालते हैं तो एफ आपका मैग्नेटिक फोर्स है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है और आपका थीटा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच का एंगल है, क्यू आपका चार्ज है और वी आपका मूविंग चार्ज का वेलोसिटी है. हियर द पार्टिकल इज रेस्ट, सो वेलोसिटी इज 0. यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में है इसीलिए वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. द मैग्नेटिक फोर्स इज 0. जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, क्यू इंटू 0 बी साइन थीटा. तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 बट वी डोंट नो वेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 or not. As the force
exerted on a particle under the influence of magnetic field depends on the orientation of the particle with respect to the magnetic field, and the electromagnetic force on particle is also not present. Magnetic field may not be zero, so electric field must be zero. So ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें से एक या एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका जी एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 2 में। If a charged particle kept at rest experiences an electromagnetic force, बोलता है कि if a charged particle kept at rest, पार्टिकल चार्जड है और उसको रेस्ट में रख दिया गया है, तो बोलता है एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों ही फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। लेट्स सी द ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी जीरो, the magnetic field must not be zero, the electric field may or may not be zero, the magnetic field may or may not be zero. Let's analyze the answer of this question. इस क्वेश्चन के आंसर को एनालिसिस कर लेते हैं। The electromagnetic force is acting on the charge particle। यहाँ पर जो फार्मूला का यूज किया जा रहा है, so force per unit area, force per unit charge is known as the electric field. So F equal to Q into E। E आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्मॉल q जो है आपका चार्ज है। वेयर F इज इलेक्ट्रिक फोर्स, Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड the value of Q is 1.6 into 10 to the power minus 19। E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। From the above formula we can say that इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यहाँ क्लियर हो जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है पार्टिकल में वर्क कर रहा है एंड द पार्टिकल इज रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में है। सो वेलोसिटी ऑफ द चार्जेड पार्टिकल इज जीरो, चार्जेड पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स को देखिए यहाँ पर रिकॉल कर लिया गया है क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर एफ इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर एफ मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ऊपर में आपका एफ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को डिनोट कर रहा था, क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। वी इज वेलोसिटी, वी आपका वेलोसिटी है एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज, बी और चार्ज के बीच का एंगल है। फ्रॉम द above इक्वेशन we can say that magnetic force will become zero, but we don't know whether the magnetic field is zero or not. We cannot make the statement about magnetic field, so magnetic field may or may not be zero. Option A and D will be correct. Hope that there is no problem to understand the question as well as the analysis of the answer। एनालिसिस ऑफ द आंसर हेल्प अस, एनालिसिस जो कर रहे हैं आंसर का वो हमको हेल्प करता है करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ ए चार्जड पार्टिकल प्रोजेक्टेड in a gravity free room deflects। वैसे रूम में इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसको, चार्जड पार्टिकल को, जो आपका ग्रेविटी से फ्री है। तो रूम को ये डिफ्लेक्ट किस तरह से करेगा।
For this we have four options A, B, C, D. There must be an electric field. This is the statement of option A. ये ऑप्शन ए का स्टेटमेंट है. देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑप्शन बी का स्टेटमेंट है. बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, ये आपका ऑप्शन सी का स्टेटमेंट है. एंड डी, बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन जीरो. अब दैट आपको समझ में आ गया होगा. देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर होना ही चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होना ही चाहिए. बोलता है कि दोनों फील्ड जीरो नहीं हो सकता. फिर बोलता है बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन जीरो, दोनों फील्ड जो है नॉन जीरो भी नहीं हो सकता. जीरो, नॉन जीरो, और वहाँ पर मस्टली मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है. अभी आप लोग आंसर के एनालिसिस करते हैं. ये आंसर का एनालिसिस हेल्प करेगा हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक आउट करने में या सेलेक्ट करने में. नो, आई एम गोइंग टू रीड द ऑप्शन a statement of the answer of this question. Let's see. Listen very carefully. Lay is projected in gravity-free room. If no force is acting on the charged particle means magnetic and electric force is not acting on the particle, then the particle will not delay. If any one the force is acting on the charged particle, then it gets delays. And also if both the force is acting on it, then also the particle will delay. So both electric and magnetic yield cannot be zero. And also they can be non-zero. So options C and D are correct. Fourth question. तो hope that आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा. यहाँ पर ऑप्शन सी और डी जो है करेक्ट है. बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी जीरो, दोनों फील्ड्स जीरो नहीं हो सकता. बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन जीरो, दोनों फील्ड जो है आपका नॉन जीरो हो सकता है. इट मीन्स दैट सी और डी ये दोनों ही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट होगा. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. ए चार्जड particle moves in a gravity free space without change in velocity. Which of the following is are possible? इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट हो सकता है. ए में आपका दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बी इक्वल टू जीरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर जीरो. दिस इन ए में आपका यही है. बी में आपका बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है. सी में आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं है बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. डी आपका बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो बी, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. अब इस क्वेश्चन के आंसर को एनालिसिस करते हैं. द पार्टिकल इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. पार्टिकल कहाँ पर है तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में है. इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यदि पार्टिकल में कोई भी फोर्स एक्टिव नहीं है, द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. ठीक है, कोई भी फोर्स वहाँ पर एक्टिंग नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. इफ बोथ द फोर्स electric and magnetic force acting on the particle is same, then both forces get cancelled. ठीक है, दोनों कैंसल्ड हो जाएगा. एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो. एंड इफ electric force is zero and magnetic force is non-zero, in this case the magnetic field is in the direction of velocity of a particle,
then the magnetic force acting on it will become zero. ऑप्शन ए बी डी, इस क्वेश्चन के लिए ए बी डी ये तीन ऑप्शन करेक्ट होगा। ए मतलब बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। और डी electric field not equal to zero and magnetic field not equal to zero. So the correct option of this question will be A, B, D. Let's see question number 5. Question number 5 को देख लेते हैं। A charged particle moves along a circle under the action of possible constant electric and magnetic fields. Which of the following are possible? यहाँ देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जीरो बता रहा है। बी में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है। सी में आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और डी में आपको बता रहा है कि दोनों ही फील्ड जीरो नहीं है। लेट एनालिसिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर का एनालिसिस करते हैं। चार्जेड पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल। If electric force is acting on the particle, the speed of the particle will increase. Because of this, the particle cannot be moved in a circle. In this case of magnetic field, it will only change the direction of the velocity of a particle. It cannot change a speed of the charged particle. So magnetic field cannot be zero. So option B is correct. इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जीरो होगा बट मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका जीरो नहीं होगा। 30 मिनट्स के आसपास का क्लास हो चुका है। अब इस क्लास को हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल्स करेंगे। होप दैट this class will be useful to the schooling students, audience who are interested in physics. Now I am going to over this class. मैं इस क्लास को कवर करने जा रहा हूँ। ये कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी होगा।